तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with our daily current affairs series, 10 minutes and 10 plus current affairs. So let's start with 3rd December 2021 highlights and that too current affairs as well as static GK in the form of MCQs. So MCQ number 1, recently Austria's ex-chancellor who became the world's youngest elected leader in 2017 quit politics. What was her name? So guys, before we will be moving for the options, I will point out a static GK for you. So Austria's ex-chancellor, जो भी आंसर होगा ना वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट इलेक्टेड लीडर बन चुका है 2017 में. तो जो भी सही आंसर होगा वो प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, ठीक है. So option A is Victor Adler, option B is Otto Adler, option C is Sebastian Kurz and option D is Franz Jonas. So it is a high level MCQ, right? ये डायरेक्ट आपको ऐसे मतलब आप जज नहीं कर पाओगे अगर आपको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है, आप कैंसिल आउट भी नहीं कर पाओगे. So here the right answer is option C, that is Sebastian Kurz. So please note down that he became the world's youngest elected leader in 2017. Okay, so he was an Austrian politician as well as a ex-chancellor, means he was a chancellor of Austria. Moving ahead, who is the Russia's current foreign minister? Okay, तो ये ईयर हाईलाइट किया मैंने 2021 में फॉरेन मिनिस्टर कौन था रशिया के. सो एंड ही वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. ये जो भी मैं आपको MCQs बनाता हूँ ना वो न्यूज़ में रिसेंटली होता है, हाइलाइट्स में होता है, इसीलिए मैं उसके ऊपर स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब उसके ऊपर पूछता हूँ, बिकॉज दैट्स द ट्रेंड एंड दैट्स द वे हाउ द करंट अफेयर सेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम वर्क्स, और इवन तो इफ इट इज एकेडमिक्स. So we will move on to options. A. Sergey Lavrov, B. Sergey Abisov, C. Igor Chubais, D. Yuri Gladkov. So here the right answer is option A, that is Sergey Lavrov. So he is the current Russian foreign minister. Moving ahead, very easy MCQ. After one or two high level MCQs, we will be moving on to a easy MCQ. So S-400 missile system was bought by India from which country? तो कौन सा कंट्री ने यार बनाया S-400? अभी S-500 भी बना रहा है वो कंट्री. It is in the test. So options are China, Russia, Israel and US. So here obviously the answer is B, Russia. It is also currently testing S-500 missile system. Okay, moving ahead, once again a different question, that is a unique question. Question number 4, we have Lon Voratu campaign is a an, means वो campaign किसके बारे में. So options are anti-Naxal initiative, option B is pollution control initiative, option C is employment initiative and option D is anti-slavery initiative. So the right answer here is option A, that is anti-Naxal initiative. Now Lon Voratu means return home, means surrender to the police, surrender to the government and you can return home. So it is an anti-Naxal initiative, okay, by the government. Moving ahead, who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Abhi, if you are well updated, you might be knowing that Rajya Sabha has suspended 12 MPs, right? So it has been in news. So anything related to Rajya Sabha can be asked in the exam. So the options are, question is very easy. Options are Prime Minister, Lok Sabha Speaker, President and Vice President. So here the right answer is ex officio chairman पूछा है. Of course it is option D, that is Vice President. Moving it, and current Vice President is Venkaiah Naidu. Okay, respected Vice President Venkaiah Naidu. Now moving ahead, question number 6, Forest Conservation Act was enacted by the Parliament in 1970, 1980, 1985 and 1986. So here the right answer is option B, that is 1980. Now one more thing you need to understand, that it was first enacted by the Parliament in 1980. There is also amendment which was added and it is also known as FCA 1986. 1986 में उसको थोड़ा अपग्रेड किया गया था
but first time it was enacted in 1980. So if there is a direct question when it was enacted or when is the latest amendment, then there will be two different answers. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वो इनैक्ट 1980 में हुआ था. डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो 1980 उसका आंसर होगा. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 7. Who was awarded Woman of the Year 2021 award at World Athletics Award Ceremony? Option A is Anju Bobby George. Option B is PV Sindhu. Option C is PT Usha. Option D is Karnam Malleshwari. So here the right answer is option A, Anju Bobby George. So she was awarded as the Woman of the Year 2021 award. Very important, huh? Note it down. By the World Athletics Awards Organization. Okay, World Body ने उनको ये award से नवाजा है. So please remember in her name, that is Anju Bobby George. Now she was awarded for grooming young talent, young budding talent. उन्होंने अभी यंग जनरेशन की बहुत हेल्प की, ग्रूम किया उनको हाई लेवल तक पहुंचने में, तो इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है. दैट इज वुमन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड. ठीक है. नाउ यू माइट गेट कंफ्यूज्ड विद अदर नेम्स बिकॉज दे आर ऑल्सो द फेमस वंस, राइट? So please remember that Karnam Malleshwari is related to wrestling. First woman to get an Olympic medal. Now moving ahead. Question 8. WTA suspended all of its tournaments in which of the following country? Option A is Russia. Option B is China. Option C is North Korea. Option D is South Korea. यार अभी इधर हम कैंसिलिंग द ऑप्शंस की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. कैंसिल द ऑप्शंस. नॉर्थ कोरिया तो नहीं हो सकता, वहाँ यार खेला ही नहीं जाता, तो सस्पेंड क्यों करेंगे? अगर कभी खेलते हैं वहाँ, जैसे कि अभी कोई पर्टिकुलर नेशन में टूर्नामेंट खेला जाता है, तभी हम सस्पेंड कर सकते हैं ना. इफ देयर इज नो टूर्नामेंट, नो पर्टिकुलर एक्सेस टू अ कंट्री, हाउ कैन इट सस्पेंड? सो नॉर्थ कोरिया ऑप्शन कैंसिल आउट. साउथ कोरिया तो यार लड़ाई झगड़ा में रहता नहीं है. बचे रशिया और चाइना. अभी रशिया में करने की कोई बात नहीं बनती बिकॉज रशिया इज़ रिलेटेड टू डोपिंग. वो डोपिंग के कारण उनको ये ओलंपिक वर्ल्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू मोस्टली डोपिंग. तो डोपिंग से रिलेटेड जो भी मामला होता है वो रशिया से रिलेटेड होता है. लेकिन WTA, दैट इज़ वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन. So remaining there is only one option. So the right answer is option B, that is China. That is because of the recent case of Chinese tennis star. Fine. उसका नाम मुझे बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में. चाइनीज टेनिस स्टार का एक फेमस केस चल रहा है, उसके सपोर्ट में उन्होंने सस्पेंड कर दिया है. Moving ahead with question number 9. So vitamin B1 is also known as. Option A is thiamine, option B is biotin, option C is folate, and option D is riboflavin. So here the right answer is option A, that is thiamine. Now biotin is B7, folate is B9 plus folic acid, and riboflavin is B2. Okay, note it down. Now vitamin 10 majorly helps body in absorbing magnesium, iron, sodium or calcium. So here the right answer is, क्या लॉक करें? So here the right answer is option D, that is calcium. Okay, यार ये vitamin 10 हो गया. Sorry, that is vitamin D. The question is vitamin D and the right answer is D, calcium. मैंने पढ़ते वक्त सही कहा था vitamin D. Vitamin D majorly helps in absorbing calcium. Moving ahead to our last question, which you will answer in the comment section. That is the homework. So vitamin C is also known as A, acetic acid, B, absorbic acid, C, pantothenic acid, and D, carbonic acid. Very easy question. So very easy to comment below. So that's screen group for you. Have a great time ahead. All the very best. By sheer coincidence. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए. करो फिर, हमारी पावर है. जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो. आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई.